Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello, dear students. As I told you that I will start the first class of JEE Mains 2020 from the 1st June. So, today I am here to take about your first class. You all know that there are only 47 or 48 days of your exam JEE Mains. That's not a big matter. I am here to make your preparation more strong. So today I only discuss about the problems of maths. I never discuss about any properties, because you all know the properties. You have just completed the ISC, CBSC or any boards you have completed. So that's why I do not discuss here about any properties. I only discuss about the problems. Okay. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बोलूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। As I told you that I only discuss about the problems and not the properties. That's why today I only discuss about two chapters, matrices and determinants. These two chapters are very easy and very scoring. Let's come to the point. Let's come to the first math. First math. Let fx equal to 1 plus x by 1 minus x. If A is a matrix and such that a cube equal to null matrix, then f of a equals to option A 1 minus a plus a square, option B 1 plus a plus a square, option C 1 plus 2a plus 2a square, and option D 1 minus a square. ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैथ है। तो इस मैथ को कैसे सॉल्व करें, चलिए देखते हैं। गिवन fx equal to 1 plus x by 1 minus x. Clear? Now and aq equal to null matrix O. Okay, now f of a equal to 1 plus a by 1 minus a. Okay, no problem. Equal to 1 minus a inverse 1 plus a equal to the expansion of 1 minus a to the power minus 1, that is 1 minus a to the power inverse. What is the formula? 1 minus x to the power inverse. Formula is 1 plus x square plus dot up to infinity. That is 1 plus a square plus a cube plus dot 1 plus a. But given that a cube equal to null matrix, that is these all are null matrix. So 1 plus a square, 1 plus a. Here we neglect a cube and a higher power of a. Now 1 plus a plus 1 plus a square plus a square plus a cube implies that 1 plus तो देखिए क्या होते हैं, इक्वल टू 1 प्लस ए 2a प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर एंड ए क्यूब इक्वल टू कत क्या है, नाल मैट्रिक्स है. सो दिस इज 0.
So the result is 1 plus 2a plus 2a square, and option C is correct. This is the first math. The math is very interesting. I hope you all make out this math. Now let's come to the next math. Let's start the second math. देखो ये second math क्या है. If capital A equal to row wise 1 1 1 1 1 1 1 1 1, then option A transpose equal to A transpose A equal to A square. Option B, A transpose equal to 3A. Option C, A is singular, and option D, A square equal to 9A. ये जो मैथ है ना, ये एक बहुत ही इजी मैथ है. ये मैथ देखकर ही पता चलता है क्या है. ये ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा. कैसे? अगर आप सिंगुलर ए मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर व्हेन अ मैट्रिक्स वी कॉल्ड व्हेन अ मैट्रिक्स टू बी सिंगुलर if a matrix is said to be singular if determinant of the matrix is equal to 0. If you take the determinant of this matrix A, then you can see that all the rows or all the columns of this determinant are identical. And the properties of a determinant क्या थे properties थे, if two rows or two columns are identical, then the value of the determinant is 0. Here all the rows and all the columns of this matrices are identical. Then det A equal to 0 implies that A is singular. ये ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. ये जो मैथ है ना, इसका मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है. तो नाउ you can see that A matrix and A transpose matrix both are same because all the elements of these matrices are equal and all are unity or identity. Then clearly A transpose equal to A. Then clearly we can say that A transpose equal to A transpose A equal to क्या होगा? A square. Because as A transpose equal to A transpose equal to क्या है? A है, implies that A square. Similarly A transpose A equal to A square, that is option A is also correct. Now we will check about option B and option D. Okay, option B क्या है? Option B है A transpose equal to 3A. सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए एंड ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को. लेट्स मल्टीप्लाई. ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1. ऑल्सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1. लेट्स मल्टीप्लाई. क्या होगा मल्टीप्लाई करके? क्या होगा? 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Very easy, you can check. Now you have to take common 3 from this matrix. Then if I take common 3 from this matrix, then the entries will be 1 1 1 1 1 1 1 1 1. That is A. That implies that A transpose equal to 3A. So option B is also correct. Now we have to check about option D. Option D is also correct. Very easy this is. Let's check. A cube equal to A square dot A. A square equal to 3A डॉट ए. 3A डॉट ए फिर से ए स्क्वायर हो जाएगा. implies that 3 dot A square equal to 3A implies that 9A. That is A cube equal to 9A. Option D is also correct. So both A, B, C, D are correct for this math. Okay, I hope you all understand this math. Now let's come to the third math. Now let's see the third math. What is the third math? Third math is if A equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta and B equal to
1 0 minus 1 1 and C equal to A B A transpose. Then A transpose C n A is equal to n belongs to n, and the options are options A minus n 1 1 0 and B equal to 1 minus n 0 1, C equal to a to the power n, D equal to 1 0 minus n 1. What is the value of a to the power n C n A? Okay, now let's see that A equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta. Then A transpose equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta. So A transpose equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, cos theta minus sin theta, and cos theta minus sorry क्या थे cos theta sin theta, हाँ cos theta sin theta minus sin theta cos theta. ओके, नाउ cos इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए मैट्रिक्स को, इस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1. एंड हेयर क्या होगा? माइनस साइन थीटा प्लस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज 0. माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज 0. एंड माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 इक्वल टू I. That is, we get A transpose equal to I. This is 1. Now we have to check about also you see that C equal to A B A transpose implies that now A transpose C multiply both sides by A transpose. Okay, we take the left operation of A transpose from both sides. Okay, that is A transpose C equal to A transpose A A transpose A B A transpose. Now the value of A transpose A, और देखिए यहाँ पर we get from 1 A transpose equal to I. Okay, similarly we can conclude that A transpose A equal to also I, that is A transpose A equal to I, that is equal to B A transpose. Thus we get C equal to B A transpose. This is number 3. This is number 3. Okay, फिर से देखिए, ये मैं साफ कर देता हूँ क्वेश्चन को. We have to find the value of A transpose C N A. Okay, now A transpose C n minus 1 A, C to the power n can be written as C dot C to the power n minus 1. Also we know that A transpose C equal to क्या होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर A transpose C होगा. ओके, हाँ,
ए ट्रांसपोज सी इक्वल टू क्या है, बी ए ट्रांसपोज है, बी वी पुट द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज सी, बी ए ट्रांसपोज सी एन माइनस वन ए बाई 3 equal to, also now we use the same method for c to the power n. Now we write c to the power n minus 1 as the product of c dot c to the power n minus 2. Let's see, c dot c to the power n minus 2a equal to b a transpose c equal to क्या होगा, a transpose c equal to b a transpose, b a transpose c to the power n minus 2a equal to b square a to the power a transpose c to the power n minus 2a. Let's see that c to the power n minus 2 यहाँ पर 2 है and यहाँ पर 2 है. After taking the similar manner, after n steps we get b to the power n a transpose c to the power 0 a. Okay, that is b to the power n a transpose a, b transpose and a transpose a equal to क्या होगा, I होगा, that is b transpose I and this equal to b transpose, that is a transpose c to the power n a equal to b b to the power n होगा यहाँ पर, equal to b to the power n. Okay, a transpose c to the power n equal to b to the power n. What is the question? The question is asking about the value of a transpose c to the power n a, and we get the value b to the power n. Now we have to find the value of b to the power n. Now let's see. What is the value of b? B equal to 1 0 minus 1 1. Therefore b square equal to क्या होगा, 1 0 minus 1 1, 1 0 minus 1 1. इसका प्रोडक्ट करके क्या होगा, 1 0 0 minus 1 minus 2 1. Similarly b to the power 3 equal to क्या होगा, sorry, b square dot b, value of b square, this is 1 0 minus 2 1, 1 0 minus 1 0 equal to क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 1 0 minus 3 0. Applying this argument, we can conclude that b to the power n equal to 1 0 minus n 0, where n is any natural number. So option D is correct. Option D. I hope you all make out these questions. Okay, now let's come to the next question. What is the next question? The next question is, if AB equal to A and BA equal to B, then A is idempotent, option B. B is idempotent, option C. A transpose is idempotent, option D. B transpose is idempotent. Okay, I hope you all know the definition of idempotent. What is the definition of idempotent? Idempotent, a matrix is said to be idempotent if A square equal to 8. Okay, a matrix A is said to be idempotent if A square equal to A. This is the definition of idempotent matrix. Now let's come to the solution. Given AB equal to A,
Okay, now we operate matrix B both sides from the left. Then B into AB equal to BA. We know that matrix multiplication holds the associative property, so we use here the property associativity implies that B equal to BA implies that what is the value of BA given that BA equal to B. So in the position of BA we replace BA by B. Now B equal to BA equal to B implies that B square equal to B, that is B idempotent. Students, in these questions also more than one options are correct. Okay, so option B is idempotent, that is option B is correct. Now we check about A. Also given BA equal to B. Here we operate matrix B from the left. Now in that case we operate matrix A from the left, that is BA equal to AB implies that we use associative property, that is A equal to AB. Now given that AB equal to A, that is we replace AB by A implies that A equal to A implies that A square equal to A, that is A is also idempotent. So option A is also correct. Now we check about option C. Okay, let's see. A transpose whole square. Now we can write A transpose whole square as A square transpose. Okay, now we see that A is idempotent, that is A square equal to A. So we put the value of A square here, that is A square equal to A transpose. That is we get A transpose square equal to A transpose, which implies A transpose is idempotent. That is option C is also correct. By similar argument, by similar calculation, we can also conclude that B transpose is also idempotent. That is option D will be also correct. So in this math, both options A, B, C, D are correct. Okay. Now let's come to the next math. That is exercise 5. What is this? Given that let capital A equal to this matrix and this matrix, then A is option A nilpotent, idempotent, orthogonal, periodic. This math is your home task. इस मैथ को मैं सॉल्व नहीं कर दूंगा तुम सभी को. इसका जो सॉल्यूशन होगा तो वो सॉल्यूशन तुम सभी मुझको कमेंट बॉक्स में बताना. ओके, I hope you know the definition of nilpotent. What is the definition of nilpotent? If a matrix A is said to be nilpotent if A square equal to null matrix. If A square equal to null matrix, then that matrix is said to be a nilpotent matrix. You know the definition of idempotent matrix. In the previous math, I discussed about idempotent matrix. Also, you know the definition of orthogonal matrix. What is the definition of orthogonal matrix? Any matrix A is said to be orthogonal if A transpose equal to A transpose A equal to I. Also, you know the definition of periodic. A matrix A is said to be periodic if there exists a positive integer k such that A to the power k plus 1 equal to A. Okay, this is your home task. Now let's come to the next math.
Now, in the next math, what is the next math? The next math is if a of alpha beta equal to cos alpha sin alpha 0 minus sin alpha cos alpha 0 0 0 e to the power beta. Then a of alpha beta inverse in the terms of the function a is option A of alpha minus beta, B of minus alpha comma minus beta, C of minus alpha beta, none of the above, none of this. ओके तो चलिए इस मैथ को स्टार्ट करते हैं. नाउ ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है उसको पहले एवेलुएट करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है. इसको ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, कॉस अल्फा इंटू ई टू दी पावर बीटा कॉस अल्फा माइनस 0 माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस ई टू दी पावर बीटा साइन अल्फा माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा, ई टू दी पावर बीटा कॉमन चलाएगा, ई टू दी पावर बीटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ई टू दी पावर बीटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. You all know the formula of a matrix, formula of inverse of a matrix. What is the inverse of a matrix? A inverse equal to adjoint A by determinant of A. Okay. Then what is the value of A of alpha beta to the power inverse? That is A of alpha comma beta inverse equal to adjoint of A of alpha comma beta by mod A. एडजॉइंट क्या होगा, ये डिटरमिनेंट रहेगा तो ई टू दी पावर बीटा कॉस अल्फा उसके बाद क्या होगा माइनस ई टू दी पावर बीटा साइन अल्फा. इस पोजीशन के लिए माइनस होगा और ये एक माइनस, देन ई टू दी पावर बीटा साइन अल्फा 0 हो जाएगा ये, और इस पोजीशन पे क्या होगा प्लस, फिर से माइनस पोजीशन है ये माइनस एंड ई टू दी पावर बीटा, हाँ ई टू दी पावर बीटा साइन अल्फा माइनस ई टू दी पावर बीटा साइन अल्फा, ये होगा ई टू दी पावर बीटा कॉस अल्फा एंड ये होगा 0 ऑल्सो 0 0 एंड इस पोजीशन के ई टू दी पावर बीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस दैट इज 1 ट्रांसपोज इक्वल टू 1 बाई ई टू दी पावर बी. दैट इज अगर ई टू दी पावर बीटा इस मैट्रिक्स से कॉमन चला आएगा तो क्या होगा, ई टू दी पावर बीटा निकल जाएगा, वो कट जाएगा. उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोज लेने के बाद क्या, ट्रांसपोज करके लिखते हैं, देन कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 ई टू दी पावर माइनस बीटा. ये पोजीशन पे ई टू दी पावर बीटा नहीं है तो 1 बाई ई टू दी पावर बीटा 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 बाई ई टू दी पावर बीटा मल्टीप्लाई करके क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस बीटा हो जाएगा. एंड दिस इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा. यू कैन पुट ए टू दी पावर अल्फा बीटा, वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ ए टू दी पावर अल्फा बीटा. Here you can replace alpha by minus alpha and beta by minus beta, then you will get the value this. That is option B is correct. Okay, I hope you all make out this question or this answer also. This is the 7th math. What is this? Let matrix A equal to this, and then date A is divisible by L square plus m square plus n, sorry, L plus m square plus n square plus t. Option B, option C, L square plus m square plus n square plus t, L square plus m square plus n plus t and t. This is a mathematics math from determinant, and this is a very easy math. I
होप दैट यू ऑल कैन डू दिस मैथ, कैन सॉल्व दिस मैथ. सो ये मैथ तुम्हारा होम टास्क रहेगा और इसका जो आंसर होगा वो आंसर तुम कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो. इसका 2 ऑप्शन करेक्ट होगा, वो मैं हिंट कर देता हूँ. ठीक है. नाउ सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट मैथ. दिस इज द लास्ट मैथ ऑफ टुडेज क्लास. लेट्स सी दैट. लेट date A not equal to 0, date B not equal to 0, and A transpose A equal to A and B transpose B equal to B. What is given that? Given that A is non-singular, B is non-singular, A is symmetric, also B is symmetric. Okay. Then which of the following is or are not correct? Mention this not correct. That is, जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन राइट नहीं होगा. जो ऑप्शन नॉट करेक्ट होगा, जो ऑप्शन नॉट करेक्ट होगा अर्थात जो ऑप्शन फॉल्स होगा वो ऑप्शन एक्सेप्टेबल होगा. सपोज दिस ऑप्शन करेक्ट हो गया तो आंसर जब तुम दोगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा. सपोज ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा. ओके, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा. देन योर आंसर्स विल बी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. गिवन दैट which of the following is or are not correct. I hope you all make out. This is also your home task. Take the screenshot. आज यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं. तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, तो अगर ये क्लास मेरा अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए. तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास इतना ही होगा. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे. तो ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो जल्द से जल्द. थैंक यू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.